Hello, dear enthusiastic minds. This is your learning friend Anjana, and once again, a very enlightening session for grade 7 maths for you. We are starting with chapter number 12, that is symmetry. तो सबसे पहले आता है वार्म अप और छोटे छोटे से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं और फिर सब्जेक्ट की डेप्थ में जाएंगे. So first question is draw the line of symmetry for letters H. हमने letter H draw किया. इसमें हमने एक horizontal line of symmetry बनाई, ये वाली, और एक ये vertical line of symmetry बनाई, right? And similarly अगर आप alphabet T लेते हैं तो alphabet T की सिर्फ एक line of symmetry होती है, that is vertical line of symmetry. बेटा जब भी हम लाइन ऑफ सिमेट्री बनाते हैं इट इज ऑलवेज ड्रॉन विद डॉटेड लाइंस. गॉट इट? अब हम आते हैं अल्फाबेट वाई. अगेन इट हैज ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री दैट इज वर्टिकल, और अल्फाबेट के में हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री आती है. गॉट इट? नाउ वी विल बी आइडेंटिफाइंग द सिमेट्रिकल फिगर्स. तो इस फिगर में हमारे पास ये एक वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है. सो दिस इज अ सिमेट्रिकल फिगर, बट दिस फिगर इज नॉट सिमेट्रिकल. सिमेट्रिकल होने का एक बहुत सिंपल सा रूल है. अगर हम उसको फोल्ड करते हैं तो दो पार्ट्स आइडेंटिकल होते हैं और ओवरलैप करते हैं. लाइक इन दिस फिगर अगर हमने ये हॉरिजॉन्टल डॉट्स बनाए तो ये आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री आ गई. सो दिस इज सिमेट्रिकल. And this figure can be symmetrical if I draw a line like this. But this is not symmetrical, this is not symmetrical. अब next question है, आपने reflection images बनानी है. बहुत interesting activity है. Hold your pencil और ऐसे start करेंगे जैसे यहाँ पर ऐसे pencil गई है तो we are going to take a pencil like this, and this way you will make a symmetry. जैसा पार्ट लेफ्ट साइड में है सेम राइट में बनेगा. सिमिलरली जैसा पार्ट राइट में है वैसा ही आप लेफ्ट साइड में बनाएंगे. मेक श्योर दैट यू होल्ड अ रूलर और उसको बहुत ही ध्यान से ड्रॉ करेंगे. अब सिमेट्री क्या है? सिमेट्री इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट और बहुत यूजफुल है. बहुत सारे फील्ड्स में हम इसको यूज करते हैं, जैसे आर्किटेक्चर में, डिजाइनिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में. बहुत सारी जब आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं वहां पर सिमेट्री की बहुत जरूरत होती है. एंड देयर आर थाउजेंड्स ऑफ नेचुरल थिंग्स दैट आर सिमेट्रिकल. अगर आप ताजमहल को देखें, एक बहुत ही फेमस मॉन्यूमेंट है जो सिमेट्री का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, विच इज वन ऑफ द 7 वंडर्स of the world. Now we are talking about translation symmetry. So you might have seen repeated motifs on the साड़ी. मम्मा की साड़ी देखी है, कई बार दुपट्टा होता है और उसपे बहुत सारे ऐसे कोई भी पैटर्न बॉर्डर पे, बीच पे एक सिमेट्रिकल पैटर्न पर आते हैं in the form of tiles. And you can see these designs are made up of motifs of some shape and size, और उसको join करके बहुत सुंदर सुंदर से prints बन जाते हैं, right? And they are repeatedly arranged one after another to make them look very pretty and beautiful. So patterns or design is created by a single motif or shape by changing the position. कभी उसको left turn किया 45 डिग्री, 90 डिग्री, कभी राइट टर्न किया, दैट मीन्स क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज उनको मूवमेंट देते हैं. एंड दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन सिमेट्री. तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि इस फिगर में हमने ये एक एग्जांपल लिया, एक फिगर ली और इसको मूव किया और यहाँ पर हमारी एक सिमेट्रिकल फिगर बनकर सामने आ गई. नाउ वी लर्न अबाउट regular polygons and their lines of symmetry. Regular polygons का क्या मतलब है? Closed figure made up of 3 or more line segments. अब हम 3 line segment वाली फिगर को बोलते हैं triangle. And triangle में अगर all 3 sides equal होंगी
तो हम उसको एक स्पेशल नाम से बुलाएंगे, दैट्स कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल. सो वी हैव अ इक्विलेटरल ट्राइंगल हियर. अब इस इक्विलेटरल ट्राइंगल में कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री है? वी हैव 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री एंड वी कॉल देम मीडियंस, राइट. अब हम आते हैं अपने स्क्वायर में. 4 साइडेड फिगर, अगर 4 साइड्स इक्वल होती हैं तो उसको स्क्वायर बोलते हैं. And it will have 4 lines of symmetry, the vertical, horizontal and 2 diagonals. Similarly, अगर हम pentagon में आते हैं and it is an equal sided pentagon, that is we have a regular pentagon, तो इसमें हमारे पास 5 lines of symmetry बनती हैं. हर vertex से opposite side को equal part में divide करते हुए हमारी 5 lines आ जाएंगी. And these 5 lines are making the figure symmetrical. Coming to a hexagon, it has 6 lines of symmetry. Then we come at reflection symmetry. तो इस फिगर में आप ऑब्जर्व करेंगे ये लाइन 2 इक्वल पार्ट्स में, 2 सिमेट्रिकल पार्ट में, 2 मिरर इमेज रिफ्लेक्शन पार्ट में आपकी फिगर को डिवाइड कर रही है. इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन सिमेट्री. नाउ मूविंग फर्दर, we have exercise. So how many lines of symmetry are possible for these figures? बहुत interesting topic है. Just take out your pencil and try doing it in your book. So we'll try drawing a line like this and make sure you are holding a pencil in your hand with the scale so that you could do it neatly. यहाँ आते हैं, यहाँ पर you have to identify multiple lines of symmetry. तो हमने ट्राई किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, एक वर्टिकल लाइन आ गई. लेट्स ट्राई इफ इट वर्क्स. एंड सिमिलरली वी हैव अनदर लाइन ऑफ सिमेट्री. गॉट इट? हियर वी हैव वन लाइन, देन सेकंड लाइन, देन वी हैव थर्ड लाइन एंड फोर्थ लाइन. एंड हियर वी हैव 1, 2 and 3. Understood? Now draw the lines of symmetry in the following figures. So make sure that both sides have the holes at equal distance. तो एक आपकी horizontal line आई, एक vertical line आई, but यहाँ पर हमारी diagonal lines नहीं आ सकती. Okay, so we will try drawing the diagonals. It's not working. But यहाँ पर आपका square है. तो स्क्वायर में एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल, एक डायगोनल, ऐसे another diagonal. So we can draw 4 lines of symmetry. Now rest is your turn. You try it yourself. And here in the following figure, the line of symmetry are given. Locate the position on of the other holes in the reference to the line of symmetry. यहाँ पर हमें लाइन ऑफ सिमेट्री दी हुई है, तो ये होल इधर है, इक्वल डिस्टेंस पर एक होल यहाँ पर आ जाए. सिमिलरली दिस होल इज हियर, वी मेक वन मोर होल हियर. गॉट इट? एंड हियर हाउ मेनी होल्स विल यू ड्रॉ? 1 and 2. गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने इन फिगर्स को कंप्लीट करना है. जितना पार्ट राइट साइड में दिया है बिल्कुल एग्जैक्टली सेम पार्ट लेफ्ट साइड ऑफ द फिगर में ड्रॉ करेंगे. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Shade some more squares in the given grid so that the resulting figure will become symmetrical about the diagonal. So what will you do? If you look at the diagonal, this is the shaded one, we are going to shade this one. Now similarly, this is the shaded one, we are going to shade this one. This is the shaded one, you are going to shade this one. Okay? और ये आपकी figure symmetrical बन जाएगी. Same thing here. So you have this point, this box shaded. So इसके just diagonally हम इस box को shade करते हैं. Correct? And here this box is shaded. So you are going to shade another box which will just give the mirror image. Okay? And it will make the figure symmetrical. Next question is write the 3 letters of English alphabet which do not have any line of symmetry. So let's start counting from A, B, C, all have symmetry, D has symmetry, E has symmetry, but alphabet F, G, they don't have symmetry. Okay, P doesn't have symmetry.
Alphabet Q also doesn't have symmetry. So you can write any three English letters and draw a motif and sari of a design using front. This is a very creative work which I want you to try yourself. Now we start with a new topic, that is rotational symmetry. तो रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है? रोटेशनल वर्ड बहुत फेमिलियर है, आपने पढ़ा है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, राइट? तो वो रोटेशन ही होता है. एंड यू हैव सीन द मूवमेंट्स ऑफ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक. आपकी क्लॉक बिल्कुल रोटेट होती है एंड इट कीप्स ऑन मूविंग एंड दैट मूवमेंट इज कॉल्ड क्लॉकवाइज मूवमेंट. इसी तरह अगर आप रिवर्स मूवमेंट को देखेंगे, दैट इज नेम्ड एज रिवर्स मूवमेंट ऑफ द क्लॉक and that is called as anti-clockwise movement, right? अब हम ऑब्जर्व करते हैं इस फिगर को. इस फिगर में एक पॉइंट P है सेंटर में एंड हियर वी हैव अनदर पॉइंट. अब जब इस पेपर को हम क्लॉकवाइज मूवमेंट देंगे, दिस पॉइंट विल कम हियर एंड देन अनदर मूवमेंट, दिस पॉइंट कैन मूव हियर एंड अनदर मूवमेंट, दिस पॉइंट कम्स हियर, देन अनदर मूवमेंट इट कम्स बैक. तो जब आप किसी फिगर को रोटेट करते हैं, राउंड कंप्लीट करते ही 360 डिग्री का मूवमेंट लेते ही आपका पॉइंट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाता है, राइट? नाउ कम हियर वी हैव अ एक्सरसाइज बेस्ड ऑन इट. सो यू हैव टू गिव द एग्जांपल ऑफ shapes that have rotational symmetry. Have you seen the fan moving? Hands of fan move and it keeps on changing their position. That is a beautiful example of rotational symmetry. Similarly, when you talk about the hands of the clock, when you talk about the rotation of any circular body, that is a rotation. Wheel है, आपकी कार चलती है तो उसका wheel move करता है, that is again an example of rotation. So, which number in our number system has both reflection symmetry and rotation symmetry? That is 8. So, when you write 0, when you write 8, तो ये दो फिगर नंबर्स हैं जिसमें आप रोटेशन सिमेट्री की बात भी कर सकते हैं एंड यू कैन टॉक अबाउट द रिफ्लेक्शन सिमेट्री आल्सो. Similarly, I draw 8. This 8 has a reflection symmetry. This 8 also have a rotation symmetry. Coming to third question, rotating through the angle, the following shapes reach the second position. And you have to find the angle. कितने angle से rotation हुआ. So this was the position और ये position change हो गई इस position में. And कितना angle movement है ये? This is 90 degree. Got it? And this is a clockwise movement in 90 degree. Similarly, आपका ये point यहाँ है. Next position पे ये rotate होकर यहाँ आ गया. So this is a movement of 180 degree. Similarly, in this figure, this object is turned by 90 degree and it looks like this. So this is anti-clockwise 90 degree movement and this is again a 90 degree movement. Okay. Now find the angle of rotation and order of rotational symmetry for the following figures. So here we could see that this object is moving by 45 degree and it is coming back to the same state after 8 movements. So order हुआ 8, angle of rotation हुआ 45 degree. और बहुत important चीज बताऊंगी, अगर 8 और 45 को multiply करेंगे you are going to get 360. So 45 plus 45 is 90 and this way when you add it 8 times it comes back here. So look here. In this figure, you can see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. 8 sides हैं, तो आपका order होगा 8. And angle of rotation निकालने के लिए हम 360 को अगर 8 से divide करेंगे, we get 45 degree. Got it? Now this is a rhombus. And in this rhombus, the object, this figure moves by 180 degree and the order of symmetry is maintained. So when you divide 360 by 180, that means 2 times इसका rotation होगा और इसी तरह अगर आपने 360 को 2 से divide किया, you'll get the angle of rotation which is equal to 180 degree. Interesting? Now look at this figure. यहाँ पर इस figure को 180 degree का movement देंगे, then a rotational symmetry will be created.
So the order of symmetry will be 2. Got it? And now, which of the following figures have rotational symmetry of order more than 1? So this is the first figure. It will have an order of 4. This will have order of 1. And this will again have an order of 1. अगर आप इस फिगर को देखेंगे इसमें ऑर्डर ऑफ 2 आएगा बिकॉज 180 डिग्री के मूवमेंट के बाद ये ऐसे ही सिमेट्रिकल विजिबल होगी एंड अगेन दिस फिगर विल हैव अ rotational order of 2 and the angle of rotation when the order is 2 is 180 degree. Understood? Now find the angle of rotation and the order of rotational symmetry. This I want you to try yourself. Now I want you to try the remaining questions by your own. Okay? Now we come to MCQ. The number of lines of symmetry that can be drawn through a square is, so you want to know the line of symmetry of a square which is equal to 4. हमेशा square में 4 lines of symmetry होती हैं. 2 are diagonals, 1 is vertical and another is horizontal. A quadrilateral with only 2 lines of symmetry is called a rectangle. The order of rotational symmetry for the figure that has 0 degree of rotational symmetry will be infinite, and the letter which has both rotational and the reflection symmetry, कौन सी figure है जिसमें rotational symmetry भी है और reflection symmetry भी? Yes, that is H. And the number of line of symmetry in the Indian flag. So when you look at the Indian flag, it is rectangular in shape and it has 2 lines of symmetry. Got it? So very interesting chapter. I believe you enjoyed learning so much about the symmetry. Now stay connected for the next video. Till then, goodbye.